Poonawalla, I want to ask you. Chhattisgarh. You know, you can point fingers at the center, the politicians can point fingers at the bureaucrats, so we can keep passing the parcel, passing the blame. But, you know, what's happening in Chhattisgarh? 5 members from one family. He is the UPSC, or rather the State Public Service Commission's head, appointed by the Sarkar, whose, 5 relatives are in there. There are Neta's children also who get in there. Well, I can believe that some of them are intelligent, they have cracked the exams, but coincidence, 5 people, my son, my daughter, my son-in-law, my daughter-in-law, सभी intelligent पैदा होते हैं, हमारे बच्चे तो इतने intelligent नहीं पैदा होते. Like, I've had the fortune of meeting your kids, and you have wonderful kids, and I must say wonderful family members. But let's not make this personal. I do agree with what you're saying, and I think reforms both in UPSC and State Public Commission is the need of the hour. There is something that's terrible that's happening. Pooja, I seen her behavior in Pune. I did see her around. Much before this came out, I had spoken to the top officials in Pune about how this woman is going in a private car. I knew the builder who gave her the private car, and I was quite appalled by what is happening. But the question that Abbas ji asked is important. How did she fake her disability? That was done by AIIMS. Let's call the nonsense out on national TV. It wasn't done by some local doctor. It's done by AIIMS. Even there's another very famous IAS officer. He's faked his disability. I know him again. He invited me for one of his dinners, which I did not attend. He also faked it AIIMS. How is this happening at AIIMS? Now, if AIIMS this is happening, you've got to ask us. How is it happening in Chhattisgarh? You answer. Once you answer how it happens in Chhattisgarh, I will take the question to those who are responsible for AIIMS. I'm not blaming the center for AIIMS. Allow me to finish. Let's not shout. I'm not blaming the center for AIIMS. I'm telling you something bigger. Arun Bhatia is right. In these interviews, all of these interviews, especially in the State Commission, they're rigged. The question, they know who's coming in, and those questions are then asked. Well, they're rigged. They're rigged. Then please, please ask why T.S. Singhdev is defending, when this happened under the Congress Sarkar. But Anand Dubey ji, when I say हमारे बच्चे इतने intelligent नहीं होने, I'm talking on behalf of all citizens of India, all viewers who are sitting here. Because they see that coincidences happen where 5 people from one family can get in, but their children are struggling for admissions into colleges, into universities, to try and get jobs, especially IAS, IFS, State Public Commission. But netas and bureaucrats का nexus में उनका तो सब कुछ हो जाता है. नाविका जी नमस्ते. देखिए, जो सब खबर सुन रहा हूँ सब दुर्भाग्यपूर्ण है. चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो. देखिए, अब ये किसी राज्य और किसी एजेंसी तक सीमित नहीं है. एक नेक्सेस है. किसी भी राज्य में हो रहा है, किसी भी आयोग में हो रहा है. यूपीएससी तो एक आयोग है, वो तो कोई सरकार नहीं है. उसकी तो गठन राष्ट्रपति और उसके सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय करते हैं. तो सरकार हो चाहे आयोग हो, हर जगह अगर फेलियर है तो इसको सुधारने की आवश्यकता होगी. अगर हम नेता को भला बुरा कहेंगे तो नेता नाराज हो जाएंगे, अधिकारी को कुछ कहेंगे तो अधिकारी लड़ पड़ेंगे, हम कांग्रेस शासित राज्य के बारे में कुछ कहेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, बीजेपी शासित राज्यों को कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे. नविका मैम, ये बहुत बड़ा मसला है. ये भारत के करोड़ों भविष्य पर आपने बहुत कम लोगों की नाराजगी के बारे में सोचा है. आप इस दिन को याद रखिएगा जब देश की जनता नाराज होगी, क्योंकि ये टैक्सेस देश की जनता देती है. ये सिस्टम्स चलते हैं तो देश की जनता के लिए. और अगर जनता को आप रोज, और आपसे मेरा मतलब है बाबूज, नेक्सस, जो लोग सिस्टम चलाते हैं, अगर जनता को रोज बेवकूफ बनाएंगे तो एक दिन जनता नाराज होगी, जनता अपना गुस्सा दिखाएगी और जनता सवाल पूछेगी, भाई हम टैक्स क्यों पे कर रहे हैं जब आपसे सिस्टम चल ही नहीं रहा.
शर्त ये नाविका जी, आप ये प्रश्न हमेशा उठाती रहिए अपने चैनल में। बिल्कुल उठाती रहूंगी, कोई भी सरकार हो, कोई भी बाबू हो, मैं सवाल उठाती रहूंगी। कम से कम इस देश में इतना जरूर सीखा है कि सवाल उठाते रहिए, डरिए मत किसी से। थैंक यू वेरी मच। वी लीव इट एट दैट फॉर नाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन।